Hello everyone and a very good morning to all of you and welcome to BYJU'S Exam Prep, the most comprehensive preparation app for all exams. As we all know, from Monday to Thursday, 11 a.m. in the morning, we come up with the Hindu analysis. Today is 11th January, that is Thursday, and we are here with it. So let's start with the important articles. The first is Shinde's faction is real Shiv Sena. She is Speaker of Maharashtra. So we'll be discussing this. Then here is an article talking about a recent summit of Vibrant Gujarat Summit, where actually some foreign leaders were also invited. So we will be discussing about that as well. Am I audible? Awaaz aa rahi hai? Okay. So let's start with this. Actually, I hope you are aware, somewhere on, I think in June 2022, this was in the news, where actually the political party called as Shiv Sena, it got split. It's almost 1.5 years ago, where the political party got split between two factions. दो हिस्सों में टूट गई थी, and one faction was actually led by Uddhav Thackeray, okay, who was the then chief minister of Maharashtra at that time, and another one actually was Eknath Shinde, and he later became the chief minister of Maharashtra in around June 2022. Okay, so there was a dispute that which one is the original Shiv Sena, this one or that one. So the Shiv Sena led by Mr. Uddhav Thackeray or Shiv Sena led by Mr. Eknath Shinde. So that was the dispute. So here is Mr. Uddhav Thackeray and here is Mr. Eknath Shinde. He is the current chief minister of Maharashtra and he is the ex-chief minister of Maharashtra. Okay. Now, so the split happened. Finally it was supposed to decide, the speaker was supposed to decide which one is the main Shiv Sena. So Mr. Rahul Narvekar, he is actually the speaker of Legislative Assembly of the state of Maharashtra. Legislative Assembly in the state of Maharashtra. He has decided that the main Shiv Sena, the real Shiv Sena, is actually the Shinde faction. So this one actually is the main Shiv Sena, which is led by Mr. Eknath Shinde. So this has been decided by the speaker. So real Shiv Sena when the rival faction emerged on June 21, 2022. So the split happened and around June 2022, and finally the speaker has decided this. Okay. Now, so now the question is, actually this was when things associated with disqualification. If you are from one political party and you join any other political party after getting elected as MP or MLA, that's called as defection. So this has been very much in the news. So can you please tell me that which of the following schedule talks about anti-defection law? 9th schedule, 10th schedule, 7th or 8th schedule? What is the right answer? कौन सा schedule anti-defection law की बात करता है? Anyone? And please everyone press the like button as well. Okay, the right answer is yes. B, 10th schedule is the right answer. Priya, Chavan, Nandra, you are right. And 10th schedule was added by which constitutional amendment? ये पूछा था जामिया के एग्जाम में previous year में. They have asked multiple times. I think MHCT वगैरह में पूछा है these types of questions. 10th schedule was added by which amendment? And who was the prime minister at that time? Year bata dijiye. I'll be very happy if you tell me the year. And who was the prime minister when this anti-defection law was added? Yes, Astha Avasti, you all were right. Iska answer bataiye. It was added by, yes, Priya Chavan, very good. 52nd amendment 1985 during the time of Rajiv Gandhi. Okay, so C is the right answer to this question. Okay. Yes. Yes, Nandina Sharma, Priya Chavan, you all are right. Okay, now there's a question for you. If the decision has been taken by speaker, can it be challenged in court? Yes or no? ये पूछा था last year, previous year question जामिया, last year पूछा था. So the decision of a speaker regarding, this or regarding disqualification or any other similar thing, can it be? देखो लिखा he further refused to disqualify 30 Shiv Sena MLAs from both faction and all. तो इन्होंने किसी को disqualify नहीं किया. But can this decision be challenged? The decision of a speaker to disqualify or not to disqualify an MP or MLA, can it be challenged in a court? Yes, it can be challenged. And the Supreme Court has said this in Kyohoto Holohan case. Kyohoto Holohan. Spelling एक बार आप check कर लीजिएगा, but I think as far as I remember, this is Kyohoto Holohan versus Zachilo case, where the Supreme Court has said, yes, the speaker's decision is under judicial review. Okay? Yes. ठीक है. That is what you should be knowing it because ये news में, so again they can ask it these types of questions and all. Okay, just before moving on, if you're watching this class, नीचे में comment description में एक link है ये वाला.
So here is the link, one-on-one counseling session के लिए there's a link. Click on this link, open this, you'll get this Google form. Please fill this Google form, everyone. Yes. Let's move on further. India seen as a pillar of stability, says Prime Minister. So he was speaking at the Vibrant Gujarat Summit. Now, Vibrant Gujarat Summit में क्या होता है? The many industrialists are invited. ठीक है ना? So foreign investors. जैसे हम लोगों ने कल तमिलनाडु के इन्वेस्टर समिट के बारे में डिस्कशन किया था एडिटोरियल में. If you have watched yesterday's class, we had discussed about Tamil Nadu's investor summit. So very similar to that, this Vibrant Gujarat Global Summit happened. Foreign investors, industrialists are invited. Then foreign leaders are as well invited. So this time we have invited a lot of leaders. जैसे अगर आप देखोगे, this is Vibrant Gujarat Summit from 10 to 12 January. यानी अभी चल रहा है ये. It's happening actually. It's महात्मा मंदिर गांधीनगर गुजरात में. गांधीनगर is the capital of Gujarat. तो अगर आप देखोगे, if you see it carefully, here is the Prime Minister. Here is actually on the left side, I mean on his right side, you will find the UAE's actually president. And here is, I think, South African president. Let me check it. Yes, देखो. PM Modi with UAE President Mohammed bin Zayed Al Nahyan, Prime Minister of Czech Republic. Then Mozambique President is there. Then President of Timor Leste, and I think he will be Mozambique President. ठीक, and he is the President of Czech Republic and all. तो ये सारे लोग थे. So foreign leaders में से UAE के head आए थे, Czech Republic से आए थे, Mozambique से आए थे, and Timor Leste. ठीक है. So these were the foreign leaders who were actually present here. ठीक है. So ये पता होना चाहिए, because of course these things you should be knowing. And I think 1 or 2 years back, India and UAE signed CEPA, Comprehensive Economic Partnership Agreement. आपको पता होगा शायद, है ना? So that is what we call it as. CEPA is India UAE के बीच. CEPA was signed, Comprehensive Economic Partnership Agreement. Okay. Yes. So just have an idea, because they might ask. Okay, now we are running this MHCT mock test, all India Open mock test. Everyone should join it. So what you are supposed to do, download our app, go to CLAT section, and in MHCT section, 6 to 14 January, we are running this course. We are running this open mock test. Please do join it. That would be very, very beneficial. अगर आप इसका अटेम्प्ट करोगे तो इस दोनों में फायदा होगा. ठीक है. तो ये वाला अगर आप जामिया का एग्जाम दे रहे हो या स्लैट का एग्जाम दे रहे हो, तो भी आप ये वाला मॉक टेस्ट जरूर अटेम्प्ट करो. Because of course things are very similar questions, तो एक ही तरह के आते हैं ना. So try it. Okay, and go to our app, click here, talk to our counselor पे जाना, click करना, and you will get to know more about it. Then every Sunday 1 PM and 3 PM we are running this CLAT 2025 legal and GK booster series. So do join it on our app. Then on 14 January at 6 PM we are having this free workshop with Nivedita ma'am, CLAT 2025, how, what, and why. Okay. And this is a 2024 test series. Put your OLET preparation to test now. Okay, so this is the test series, and for 2025, this is the complete comprehensive course. We are starting the 3rd batch very soon. So do join it. And if you have any query, call on this number 95388 95678. Okay, let's talk about this. The article talking about a manifesto for justice that has sprung from crisis. तो कुछ इंडिया की कुछ क्राइसिस, जैसे ही इज टॉकिंग अबाउट सम ऑफ द इश्यूज दैट इज ग्रैपलिंग, लाइक अनएम्प्लॉयमेंट. एक समस्या जो इंडिया में है वो अनएम्प्लॉयमेंट है. सोशल एंड कल्चरल स्ट्राइफ. स्ट्राइफ का मतलब होता है इख्तलाफ, मतलब डिस्प्यूट. सो द कल्चरल डिस्प्यूट और सोशल डिस्प्यूट. इकोलॉजिकल कोलैप्स. यस, सो एक्चुअली द इन्वायरमेंट्स आर गेटिंग हार्म्ड. दिस इज अ वर्ल्ड वाइड प्रॉब्लम, है ना. इन्वायरमेंटल इशू तो पूरे वर्ल्ड में है. erosion of democratic rights, these are what the author is talking about. Then he's saying कि जैसे एक incident हुआ था recently that the people went inside the parliament. I hope you must have seen this parliamentary breach and all. Okay, जिसमें कुछ लोग आ गए थे and they used some smoke type thing and all, and this happened in the parliament. And people were saying, I mean, their relatives, the mother said कि this is because they are actually unemployed or perhaps these were the things. तो ये सब news में था. They got inspired from Bhagat Singh and all. So this was in the news. फिर एक और चीज वो बता रहे कि that sinking of Joshimath. Okay, now where is Joshimath? So this is Joshimath. Actually, let me show in the map. This is Uttarakhand, and here you will find Joshimath. Okay, and in Joshimath sank by 5.4 centimeter in 12 days, says ISRO report and all. तो इसमें बहुत सारे cracks आए थे. आपको याद होगा last year in January it was in the news. Many houses witnessed cracks. Okay, and ये गवर्नमेंट रिपोर्ट आई थी 65% हाउसेज इन जोशीमठ impacted by land subsidence.
Okay, so ये 27 September के news है last year. So this was in the news. Then the author is talking about the dam burst in Sikkim. आपको याद होगा, a few months back there was actually floods and all, dam collapse, dam burst in Sikkim. फिर conflict in Manipur has been in the news. So these are the things the author is talking about. Fair. Then the author is actually talking about an initiative, है ना. फिर एक और चीज ये है कि सस्पेंशन ऑफ 146 MPs, ये सब भी उन्होंने बात किया है इस आर्टिकल में. Then he is talking about Vikalp Sangam, alternative confluence. So this is a platform the author is talking about. So 85 people's movement have released this People's Manifesto for a Just, Equitable, Sustainable India. ठीक है. सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन आप इस तरह समझ लो, लिखा ना, सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन लाइक NGOs and all, right? These are called as civil society organizations. So they have released People's Manifesto for a Just, Equitable, Sustainable India. ठीक है. And they added under the national platform Vikalp Sangam and all. ठीक है. तो वो विकल्प संगम अपनी वेबसाइट के बारे में उन्होंने बताया कि वेबसाइट है, इनका मकसद क्या है, देखो, लर्निंग, एक्सचेंज, सोशल वेलबींग ऑफ जस्टिस, सस्टेनेबल लाइवलीहुड, है ना, सो अल्टरनेटिव फ्यूचर, राइट ऑफ नेचर, सो talking about climate action, protecting environment. So these are the things they are talking about. ठीक है. On the economy, it takes serious crisis of unemployment. तो इनकी जो मैनिफेस्टो है क्या बात करते हैं? So they talk about an unemployment, urging priority attention to small manufacturing, crafts, values added, है ना, तो स्मॉल लेवल मैन्युफैक्चरिंग को प्रमोट करना. So these are the talking things being talked about. फिर मनरेगा है, महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट. So the author is talking about the same and all. Expressing concern about interfaith and inter-ethnic conflicts, hate speech and vulnerabilities of minorities, the manifesto asks for forums of dialogue, restoring coexistence and priority for all. तो फिर एक और बात करें कि इंटरफेथ यानी एंड इंटर एथनिक कन्फ्लिक्ट्स. सो मतलब वो बता रहे हैं कि बहुत जगह देखा गया इंटरफेथ यानी बिटवीन टू रिलीजन, पीपल ऑफ टू रिलीजन फाइटिंग, और पीपल ऑफ टू एथनिक्स मतलब वही कि पीपल ऑफ टू ट्राइब माइट बी फाइटिंग, पीपल ऑफ टू कास्ट और रिलीजन और समथिंग लाइक दिस. So we need to, control these things. Hate speech should be controlled and all. So these are the things he's talking about. Marginalized section मतलब weaker sections, है ना. The weaker section like women's, Dalit, Adivasis, है ना, person with disabilities, minorities. It seeks to reserve 6% of GDP for education. आपको शायद पता होगा, the National Education Policy of 2020, which came in 2020, also talked about कि 6% of the total GDP should be invested in education purpose. ठीक है. That is what you should be knowing about it. ठीक है. Now, People's Manifesto for a Just, Equitable and Sustainable India attempts. तो इनका क्या क्या है भाई, इनके तो ये सब बता रहे हैं कि मैनिफेस्टो urges a national land and water policy that protects ecological functions such as water. So they are also talking about environment protection. इतना short में समझ लो. So these civil society or NGOs, they have come up together and they have come up with this manifesto. They are talking about कि इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन, वाइल्ड लाइफ मैनेजमेंट, बायोडाइवर्सिटी, है ना, फॉरेस्ट राइट्स की बात किया है कि द ट्राइबल राइट्स, है ना, द ट्राइबल शुड बी गिवन देयर राइट्स टू लिव इन द फॉरेस्ट एरियाज. सो दीज आर द थिंग्स बीइंग टॉक्ड अबाउट. ठीक है. फिर दे आर अगेंस्ट द वीकनिंग ऑफ इन्वायरमेंट इंपैक्ट असेसमेंट. अब देखो, एक चीज होती है इन्वायरमेंट इंपैक्ट असेसमेंट, यू अंडरस्टैंड दिस. हम जैसे फॉर एग्जाम्पल मान लो कहीं पर, लेट्स से दिस इज द एरिया वेयर एक्चुअली द गवर्नमेंट इज सपोज टू डू इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट. मतलब इस एरिया में गवर्नमेंट को 6 लेन हाईवे बनाना है. एक इंफ्रास्ट्रक्चर क्या हो सकता है, 6 लेन हाईवे बनाना है. उसके लिए क्या चाहिए, यू नीड टू एक्वायर द लैंड. सो व्हेनेवर एन इंफ्रास्ट्रक्चर इज डन इन एनी एरिया, द गवर्नमेंट इज सपोज टू डू EIA, इन्वायरमेंट इंपैक्ट असेसमेंट, कि क्या अगर यहाँ पर अगर 6 लेन हाईवे बनाए जाए या कोई और कंस्ट्रक्शन काम किया जाए तो उस पर इन्वायरमेंट पर कितना इंपैक्ट पड़ेगा उस एरिया में. फॉर दैट इन्वायरमेंट इंपैक्ट असेसमेंट नीड्स टू बी डन. ठीक है. तो उसके लिए 5-6 प्रोसेस होता है. फर्स्ट कहते हैं स्क्रीनिंग, है ना, तो उसमें क्या होता है, विच प्रोजेक्ट्स नीड्स अ फुल और पार्शियल असेसमेंट स्टडीज डिसाइड इन दिस स्टेज. फिर स्कोपिंग, उसमें था विच इंपैक्ट्स आर नेसेसरी टू बी असेस्ड इन डिसाइडिंग दिस स्टेज. देन हाँ, फिर मतलब पहले स्क्रीनिंग क्या आता है कि कौन से प्रोजेक्ट को का जरूरत है EIA करना, किसमें नहीं जरूरत है. ठीक है. उसके बाद फिर उसको स्कोपिंग क्या आता है कि किसको किसको एक्सपर्ट्स को बुलाया जाए ना, लीगल एक्सपर्ट्स, इंटरनेशनल एक्सपर्ट्स. फिर उसका असेसमेंट क्या आता है कि अगर ये प्रोजेक्ट इस एरिया में किया जाएगा तो कितना इन्वायरमेंट इंपैक्ट असेसमेंट होगा. ठीक है. इन्वायरमेंटल इंपैक्ट पड़ेगा, है ना. फिर उसके बाद क्या होता है, सो दीज आर द थिंग्स. फिर उसके बाद डिसीजन मेकिंग होता है कि डिसाइड फाइनली कर दिया जाता है कि अच्छा अब ये डिसीजन लिया जाएगा कि नहीं. और अगर मान लीजिए प्रोजेक्ट बना दिया गया तो उसके बाद में मॉनिटर भी किया जाएगा कि क्या जो प्रोजेक्ट बनाया गया वो बहुत ज्यादा इन्वायरमेंटल हार्म तो नहीं कर रहा है, सारे रूल्स को फॉलो कर रहा है कि नहीं. सो दीज आर एक्चुअली द एंटायर प्रोसेस कॉल्ड एज इन्वायरमेंटल इंपैक्ट असेसमेंट.
तो वो ऑथर ये लिख रहे हैं कि उसको वीकन नहीं करना चाहिए बल्कि उसको स्ट्रांग रखना चाहिए, मतलब वी शुड नॉट वीकन दिस आइडिया बिकॉज यस environmental impact assessment is very important to protect the environment. So whenever we are launching any project, कोई भी डैम बना रहे हैं, कोई भी हाईवे बना रहे हैं, whenever we are making these things, we have to first check what are the environmental impact of these dams or highways or buildings or industries or something like that. That's also very very important. ठीक है, तो ये सब बात हो रही है. Okay, then here is an article, change for the worse, India and Maldives should see the benefit of closer ties and all. अब देखो actually recently क्या हुआ है, I hope you are aware. So here is India, this is the Maldives. अच्छा, मालदीव्स का आप दो चीज बताइए, कैपिटल बताइए और करेंसी बताइए, प्लीज टेल मी. एंड ऑफिशियल लैंग्वेज कोई बता देगा तो आई विल बी मोर हैप्पी. प्लीज टेल मी दीज थ्री थिंग्स. ओके, मालदीव्स का कैपिटल, करेंसी एंड लैंग्वेज. Now what happened was recently we have seen the decline in relation between actually the Indian people and Maldives. So what happened was recently PM Modi visited Lakshadweep. So some of the ministers of Lakshadweep gave some wrong comment on Twitter and all, and after that actually we have seen some sort of actually decline in relationship in the sense that people started boycotting it, that will not be going or something like that. Fair. So the ambassadors were summoned, दोनों जगह से ambassador बुलाया गया, बातचीत हुई, these things. In fact, the ministers who had commented, they were actually suspended, and the president has clearly accepted the mistake and all, and he has asked for apologies and all. तो ये सब सारी चीजें न्यूज में थी. But yes, we should be knowing that the new president is actually was not very supportive of India. In fact, he has earlier took the initiative of India Out campaign and all. इससे पहले जो प्रेसिडेंट थे ना, इब्राहिम सोली, he was considered as slightly supportive of India, pro India माने जाते थे. But he lost the election, and last year I think around October or November, the new president Mohammad Muizzu came to power, and he is not very pro India or something like that. Okay. So these are the things. अब उसमें एक चीज ये है कि he might go pro Beijing or he might go near to China. Okay. हाँ, माले कैपिटल है, वेरी गुड. मालदीव्स की कैपिटल जो है वो है माले. करेंसी है रुपया. और हाँ, लैंग्वेज पता कीजिएगा, गो एंड फाइंड आउट. ठीक है. ओके, नाउ अब देखो इसमें इश्यूज क्या है. कुछ चीजें जो इंडिया के लिए भी कंसर्न है. मान लो फॉर एग्जांपल इफ मालदीव्स एक्चुअली have a tie-up, good relation, starts improving relation with China, और चाइना ने अपने टूरिस्ट भेज दिए, तो टूरिस्ट भेज दिया तब तो चलेगा, कोई बात नहीं. बट इफ द मालदीव्स give let's say a military base or let's say a port to the China, then of course it might become a security threat for us, because of course this is very near to India. मान लो यहाँ पे कोई चाइनीज शिप आकर के अलाउ कर दिया, स्टॉल करना, रुकना, समथिंग लाइक दैट. सो ऑफ कोर्स जैसे एक बार क्या होता है, श्रीलंका की एक शिप आ गई थी, चाइनीज शिप. You must remember that 1 or 2 years back. So it became a serious thing for us. So similarly, if the Maldives is very near to us, so we have to ensure that we should have a good relation with Maldives from security point of view as well, है ना. So strategic and security point of view से important है कि हमारा मालदीव से अच्छा रिलेशन हो. ओके. और इंडियन एस्टैब्लिशमेंट भी जनरली नहीं चाहते हैं कि खराब रिलेशन हो. इन जनरल वी वांट द इंडियन गवर्नमेंट वांट दैट वी शुड हैव अ गुड रिलेशन बिकॉज फ्रॉम सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू एज वेल. ठीक है, तो इसलिए भी वही बात करें ना. नीड टू टेक अ स्टेप बैक एंड रीअसेस देयर रिस्पांस. तो दोनों को स्टेप बैक करना चाहिए, रिस्पांस लेना चाहिए ना. Muizzu can really afford to antagonize India given its proximity, economic might, historical position as a net security provider of Indian Ocean and all, है ना. अब देखो मालदीव दोनों को जरूरत है, मालदीव को भी इंडिया की जरूरत है. लॉट ऑफ इंडियंस गो, है ना, फॉर टूरिस्ट पर्पस, सो देयर इकोनॉमी वर्क, है ना. फॉर आवर फ्रॉम आवर स्ट्रेटेजिक पॉइंट ऑफ व्यू इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, है ना, दैट it should be pro India, not pro China. Maldives should not go towards China, rather it should be towards us and all, है ना. तो ये सब चीजें, these are the things being talked about. The last few years of ties, South Soli government and Delhi show the benefits of stronger relationship. हाँ, इससे पहले जो प्रेसिडेंट थे, सोली गवर्नमेंट, मोहम्मद सोली who was the president, and he was considered as pro India. So we are having good relationship with the Maldives country and all. ठीक है. India's infrastructure, foreign and development project in the island and intense strategic partnership support during COVID-19 and cooperation international issue. So these are the things the author is actually talking about. Then Mr. Talmiz Ahmed, he's a foreign ex-Indian Foreign Service officer, and he is actually talking about, with the Gaza war having reached its 3-month mark, it has spread dangerously to Lebanon, Iraq, Yemen, and even Iran. On January 2, an Israeli drone strike on Hamas office in Beirut killed Saleh Aruri, the deputy leader of Hamas and all. देखो, I hope you are aware. So here is India. This is Israel. तो दिस इज वेस्ट बैंक, मैंने कई बार बताया. दिस इज गाजा, ये गाजा, ये वेस्ट बैंक है, दोनों मिलाकर के एक्चुअली पैलेस्टीन.
सो गाजाई में हमास इज देयर, बट ऊपर में आप लेबनन देख रहे हैं, यहाँ पर देयर इज एन ऑर्गेनाइजेशन इन लेबनन कॉल्ड एज हिजबुल्लाह हु इज आल्सो फाइटिंग अगेंस्ट इजराइल। नाउ सो दे आर सेइंग कि बेरूत जो है ना कैपिटल लेबनन का, सो हमास ऑफिस लेबनन में भी वेयर साले अल अरूरी द डेप्टी लीडर ऑफ हमास लोकेटेड अब्रोड, है ना। सो ही वाज किल्ड इन अ ड्रोन स्ट्राइक एंड ऑल, इजरायली ड्रोन स्ट्राइक ऑन हमास ऑफिस एंड ऑल। सो ऊपर जो है ना यहाँ पे बेरूत, यहाँ पे, सो हेयर ऑल्सो द हमास ऑफिस इज देयर which was attacked by Israel and all here, okay, in Lebanon, ठीक है। So the next day, two explosion in Kerman, the mausoleum of German Qasim Soleimani, former head of Al-Quds, killed 95 people and all. अब देखो एक और इंसिडेंट वो बता रहे, एक तो ये इंसिडेंट बताएं, the next incident he is talking about is in Iran. ईरान में एक जगह केरमान, यहाँ पे ब्लास्ट हुआ था, यहाँ पे like I think around 90 to 100 people died. क्यों? बिकॉज यहाँ पे ना कासिम सुलेमानी का जो डेथ एनिवर्सरी था, उस दिन डेथ एनिवर्सरी इज ऑन 3rd January. So he died on 3rd January 2020. Qasim Soleimani was actually one of the topmost army general of Iran, and he was killed in a drone attack, perhaps by America and all. So this was in the news. तो उसमें लोग जमा थे, so people were there, and a blast happened in the death anniversary, on the death anniversary of Qasim Soleimani. Okay, and where actually 90 to 100 people died. So the author is talking about these two incidents and all. ठीक है, so इस दोनों की वो बात कर रहे हैं. Yes, Devi language है. Yes, some I was asking about कि कौन सी लैंग्वेज यूज किया जाता है मालदीव्स में. Yes, देवी लैंग्वेज यूज किया जाता है. Yes, आस्था वसी, you were right. Very good. Okay, so this is being talked about now. Let's move on. And on January 4, USA announced targeted killing of head of Iranian affiliated militia in Baghdad. So these are some of the things. These attacks have occurred amidst the ongoing skirmishes in the Red Sea and all. अब देखो क्या है, आपको शायद पता होगा, यहाँ पर यमन में एक ऑर्गेनाइजेशन हाउथीज, and they are actually not allowing pro-Israeli ships or Israeli ship coming in this Red Sea. ये Red Sea है, तो इसमें नहीं आने दे रहे. ओके, सो जैसे मान लीजिए कि इजराइल से ऐसे ही लोग जा रहे हैं ship, so if any ship is going from Israel, here is Israel, so the Houthis are actually attacking them here. ठीक है, so these attacks have escalated tension in already volatile region that is reeling from the death and destruction wreaked by Israel in Gaza since early October and all. So these are the things they're talking about and all. Many people have died in the war and all. So these are the things. Israeli troops have also expanded their military operation to the West Bank. Nearly 300 Palestinians have been killed. तो वो बता रहे हैं कि सिर्फ यही नहीं, देखो तो actually here you will find Gaza and here you will find West Bank. Okay, so the Hamas is here. So he's saying, the author is saying that the Israel have attacked here Gaza and as well as in the West Bank. जबकि हमास यानी वेस्ट बैंक में, हमास इज एक्चुअली इन गाजा, बट दे हैव अटैक्ड द वेस्ट बैंक एरिया एज वेल. ये वाला जैसे है ना, इसमें ये वाला वेस्ट बैंक है और ये वाला जो है वो गाजा है. ओके Okay, the major concern at present is that the desperate Israel Prime Minister Benjamin Netanyahu might pursue the escalation trajectory despite the mass killing in Gaza. Israel is very limited to show its effort. So these are the things he's talking about. अब इसमें इतना डिटेल नहीं जाना है. Targeted killing served no peaceful purpose while deceased leaders were quickly replaced. The assassination increased mutual hostilities and all. So actually killing each other leaders will not stop the war. I mean, the new leaders will come and the wars will happen and all these other things being talked about. और एक और चीज है कि अब मैंने बताया भी था ये कि बेंजामिन नेतन्याहू द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इजराइल ब्रॉट जुडिशियल रिफॉर्म्स or judicial overhaul, where actually a lot of protest happened in Israel, I think last year around April or May, where actually the protest was against the government or the parliament deciding to reduce the powers of the judiciary, and this was struck down by the Supreme Court. So the Supreme Court of Israel overturned the decision of the Parliament of Israel to weaken the judiciary or judicial overhaul, है ना. तो ये भी न्यूज में था. And of course the decline, so the popularity of the prime minister is declining even in the Israel within itself and all. So these are the things. The US has been in search of policy from day one. Beyond its total political military support for Israel, Biden administration had shed crocodile tears and all. मतलब ये बता रहे हैं कि even the perhaps USA is also not doing, I mean they are just talking about humanitarian concerns but have done nothing in the ground and all. So these are the things being talked about.
द अरब स्टेट्स हैव नाइदर एग्जिबिटेड वॉइस नॉर लीडरशिप सो फार। तो मतलब ये बता ये रहे कि मेनली द अरब, इट इज नाउ द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द सऊदी अरब टू एक्चुअली कंट्रोल दिस, बिकॉज देखो क्या है, यहाँ पे सऊदी है, यहाँ पे इसराइल है। सो इफ द सऊदी अरब डिसाइड्स to take up the leadership and initiate dialogues, so might be something might happen कि अगर dialogues की बात हो or something like that to stop the war or something like that, so he's also talking about it, है ना। so that is what you should be knowing it, ठीक है। तो मतलब ये लिख रहे हैं, the principal responsibility for ushering peace now rests on Saudi Arab। तो यानी ऑथर के हिसाब से सऊदी अरब की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो जो है यहाँ पे जो वॉर चल रहे हैं इसको रुकवाए। so Saudi Arab should take an initiative to ensure that war should stop and all, so these are the things he's talking about। खैर फिर एक साइड में आर्टिकल थी, शेख हसीना enjoys popular support but she must be more accommodative and all। so recently I hope you are aware that she has won the election for the 5th time and we have seen the boycott from the opposition parties and she is from Awami League and all, okay, so just have an idea about it। Bangladesh PM Sheikh Hasina wins 5th term amid opposition boycott and all, ठीक है। so re-elected for 5th term in the office है ना। now तो this is being talked about and the opposition leader is from Khalida Zia from Bangladesh National Party, ये सब पता होना चाहिए आपको, ठीक है। so the opposition leader is from Bangladesh National Party, the leader is Khalida Zia। in this article his father Sheikh Mujibur Rahman is also being talked about। so he was assassinated on which date, ये पूछा था CLAT 2021 में। please tell me on which date Sheikh Mujibur Rahman, the father of Sheikh Hasina, was assassinated। शेख मुजीबुर रहमान इज ऑल्सो कॉल्ड एज फादर ऑफ नेशन ऑफ बांग्लादेश, ठीक है ना, बंगा बंधु भी इनको कहते हैं। ही वॉज असैसिनेटेड ऑन विच डेट, बताइए। सब कोई लाइक बटन प्रेस करते जाओ, एवरीवन प्लीज प्रेस द लाइक बटन। यस, द राइट आंसर इज 15 अगस्त 1975। गुड, प्रिया चवन, वेरी गुड। हाँ, बी इज द राइट आंसर टू दिस क्वेश्चन, ठीक है। यस गार्गी, यू ऑल आर राइट, है ना। तो लिखा शेख मुजीबुर रहमान मैसेकेर्ड ऑन 15 अगस्त 1975, दिस क्वेश्चन वाज आस्क्ड, हाँ, ठीक है ना। सो इसमें पास्ट में जा रहे हैं, जनरल इरशाद एक थे, इस पे इतना आपको डिटेल नहीं जाना है, ठीक है। यू आर नॉट सपोज टू गो इन डिटेल इन द हिस्ट्री ऑफ बांग्लादेश एंड ऑल, ठीक है। बट एट द सेम टाइम वुमेन हु वंस फॉट फॉर डेमोक्रेसी नाउ फेसेस एक्यूजेशन ऑफ टर्निंग साउथ एशियन कंट्री एंड ऑल इनटू अ वन पार्टी स्टेट। अब इन पर एलिगेशन ये है कि बांग्लादेश इज बिकमिंग अ वन पार्टी गवर्नमेंट, जहां सिर्फ एक पार्टी का चलेगा और समथिंग लाइक दैट। दीज आर द एलिगेशंस पुट बाय द ऑपोजिशन, है ना। सो द न्यू प्राइम मिनिस्टर, आई मीन द री-इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर हैज अ लॉट ऑफ चैलेंजेस, जैसे इकोनॉमिक चैलेंजेस, पॉलिटिकल चैलेंजेस, कोविड-19 के बाद पोस्ट कोविड इश्यूज, है ना। बिकॉज आफ्टर कोविड-19 अ लॉट ऑफ इकोनॉमी, आई मीन इश्यूज हैपन ऑन इकोनॉमी लेवल, है ना। इन्फ्लेशन वाज हाई, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व इशू एंड ऑल। तो देखो कोविड के बाद बहुत सारे कंट्रीज में इकोनॉमिक इश्यूज हुए हैं, है ना। सो दीज आर एक्चुअली द चैलेंजेस। फिर एक आर्टिकल ओपिनियन पेज में नीचे में आर्टिकल थी, बोइंग्स बेस्ट सेलर 737 मैक्स हिट्स एन एयर पॉकेट अगेन। अब देखो ये क्यों न्यूज में है, वी हैव डिस्कस्ड इट यस्टरडे, हम लोगों ने ये आर्टिकल डिस्कस किया था। हुआ ये था कि एक प्लेन थी, अलास्का एयरलाइंस थी, उसका गेट ओपन हो गया था, इमरजेंसी गेट गॉट ओपन एंड ऑल व्हेन ऑन 16,000 फीट, ठीक है। तो वो यूएस में पोर्टलैंड से ओरेगॉन जा रही थी, है ना। पोर्टलैंड से इट वाज गोइंग फ्रॉम पोर्टलैंड टू ओंटारियो, सो फ्रॉम पोर्टलैंड टू ओंटारियो इट वाज गोइंग, और मिड एयर में उसका गेट खुल गया, है ना। सो वही थे बोइंग 737 मैक्स था और उसका गेट मिल भी गया, ठीक है। सो दैट वाज इन द न्यूज एंड ऑल। इसीलिए इसमें सारी इंक्वायरी बैठाई गई थी। इंडिया में भी मैंने बताया था कि वॉशर मिला था इंडिया में, है ना। जब इंक्वायरी वगैरह बैठाई गई तो वॉशर मिसिंग था। देखो ये वाली आर्टिकल थी, है ना, वी हैड डिस्कस्ड इट यस्टरडे। ये वाली बोइंग 737 मैक्स ऑफ इंडियन एयरलाइन हैड अ मिसिंग पार्ट, तो वॉशर वाज मिसिंग। जब इंडिया में टेस्ट किया गया सारी बोइंग 737 मैक्स वर्क, इज एवरीथिंग फाइन एंड ऑल, सो एट वन प्लेसेस द वॉशर वाज मिसिंग इन वन ऑफ द एयरक्राफ्ट, ठीक है। सो दीज थिंग्स वेर इन द न्यूज, है ना। तो इसको फॉलो करते रहना। तो ये दिखा रही क्या, कासा एयर, एयर इंडिया एक्सप्रेस, स्पाइस जेट, ये सब यूज करती है 737, जो रेड वाला है ना, वो दिखा रहे हैं ना। सो कौन कौन कंट्री कितना कितना यूज करती है बोइंग की एयरक्राफ्ट, है ना। बोइंग बेस्ट सेलिंग 737 मैक्स एयरक्राफ्ट एक्सपीरियंस येट अनदर सेटबैक लास्ट फ्राइडे व्हेन अ केबिन पैनल ब्लू ऑफ द अलास्का एयरलाइन प्लेन, है ना। तो ये हो गया था कि ओके द इंसिडेंट हैपेंड इन 737 मैक्स 9 वन ऑफ एयरक्राफ्ट 4 वेरिएंट्स एंड ऑल, ठीक है। सो दीज आर द थिंग्स यू शुड बी नोइंग इट, कि उसका गेट ओपन हो गया था। और ये बेस्ट सेलिंग मानी जाती है, बहुत अच्छी प्लेन मानी जाती है, तो भी इसमें हो गया, मतलब अच्छा सेल होता है इस प्लेन का। सो पीपल बाई, आई मीन द डिफरेंट कंपनीज बाई दिस प्लेन एंड ऑल। सो दैट इज व्हाट इज बीइंग टॉक्ड अबाउट। सो द लॉज अराउंड, तो इसको मैंने डिस्कस ऑलरेडी कर लिया लास्ट क्लास में, लास्ट टू लास्ट क्लास में वी हैव डिस्कस्ड अबाउट दिस इंसिडेंट एंड ऑल।
The next is the laws around remission policy. This is related with Bilkis Bano case. Remission मतलब reducing the length of sentence है ना, reducing the length of sentence है ना, remission, reducing the length of sentence. Okay, yes. Now, एक business page में article थी ILO warns of rise in unemployment, decline in real wages. So International Labour Organization है ना, warns of rise in unemployment, decline in real wages. So इसका एक रिपोर्ट आई थी वर्ल्ड एम्प्लॉयमेंट एंड सोशल आउटलुक रिपोर्ट, ठीक है, दिस टॉक्ड अबाउट इट है ना, ट्रेंड्स 2024 रिपोर्ट्स रिलीज इन वियना, ठीक है, सो दिस टॉक्ड अबाउट इट. नाउ आप बताइए कि आईएलओ का हेडक्वार्टर कहाँ है? इट इज वन ऑफ द ओल्डेस्ट ऑर्गेनाइजेशन ऑफ यूनाइटेड नेशन. कैन यू प्लीज टेल मी वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ आईएलओ, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन? तो उसने कहा है कि रियल वेजेस जो है, रियल वेजेस मतलब क्या होता है? इन्फ्लेशन एडजस्टेड. रियल जहां पे होता है ना, वो इन्फ्लेशन एडजस्टेड वेजेस कहा जाता है ना. इवन इन्फ्लेशन एडजस्ट करने के बाद वेजेस यानी सैलरीज जो है वो नॉर्मल जो लेबरर्स की है वो डिक्रीज होगी माइट बी, और अनएम्प्लॉयमेंट जो हो सकता है राइज हो. दैट इज व्हाट द ऑथर इज टॉकिंग अबाउट एंड ऑल, ठीक है. सो आईएलओ का हेडक्वार्टर जो है जेनेवा स्विट्जरलैंड में, नहीं नैरोबी में जो है यूएनईपी का हेडक्वार्टर है, यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंट प्रोग्राम का हेडक्वार्टर जो है नैरोबी में, ठीक है, केनिया में. इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर जेनेवा स्विट्जरलैंड में, ठीक है. ओके, सो यू शुड बी नोइंग दीज थिंग्स. सो दिस इज ऑल अबाउट टुडेज क्लास. प्लीज सब्सक्राइब टू आवर चैनल. अच्छा, एक चीज और है, डाउनलोड आवर ऐप डाउनलोड करो बायजूस एग्जाम प्रेप का. और टुडे एट 6 PM आई विल बी मीटिंग यू विद अ क्विज, ठीक है. आज 6 बजे क्विज होगा. सो डू ज्वाइन दैट क्विज टुडे एट 6 PM वेयर एक्चुअली आई विल बी गिविंग यू क्वेश्चंस ऑफ रीसेंट क्वेश्चंस, है ना, जो रीसेंट न्यूज़पेपर में आर्टिकल्स में क्वेश्चंस आए या आर्टिकल्स आए हैं उसमें हम क्वेश्चंस रहेगा. सो आई विल बी कंडक्टिंग ए क्विज एट 6 PM. सो डू ज्वाइन इट. ऐप डाउनलोड करना है बायजूस एग्जाम प्रेप क्लैट एंड लॉ का. 6 बजे शाम में मिलते हैं, ठीक है. सो दिस इज ऑल अबाउट टुडेज क्लास. थैंक यू एवरीवन, थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे.